बहुत सारे स्टूडेंट्स पंचशीर्ष अगध को समझ नहीं पाते। आज मैंने ये वीडियो में उसको बहुत ही सिंपल कर दिया है। सो लेट अस चेक आउट द फर्स्ट श्लोका विच इज गिवन बाय चर आचार्य चरक इन चिकित्सा स्थान। शिरीष फल मूल त्वक पुष्प पत्रे ही समे घृते श्रेष्ठ पंचशीर्षो अयम विषाणाम प्रवरो वधे इति पंचशीर्षो अगध। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर श्रेष्ठ भी है प्रवर भी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सो यहाँ पे हमने आयुर्वेद दीपिका व्याख्या चक्रपाणि दत्तकृत एक दिया हुआ है। श्रेष्ठ पंचशीर्षो अयम इति पदम त्रिशीर्षाद उपेक्षया। सो यहाँ पे अगर त्रिशीर्ष अगध की कंपैरिजन किया जाए तो पंचशीर्ष अगध इज श्रेष्ठ। तो फिर प्रवरो क्यों? बिकॉज द मीनिंग ऑफ प्रवर इज ऑल्सो श्रेष्ठ। सो यहाँ पे इन सेकंड लाइन ही हैज रिटन प्रवर इति पदम विषहर योगांतरेषु श्रेष्ठता माह तेन न पुनरुक्ति। सो इट इज नॉट अ पुनरुक्ति बट इट इज श्रेष्ठ अमंग all Vishahar yogas, right? So you need to understand this. Its ingredients are fruits, root, bark, flowers, and leaves of Sirisha, all taken in equal quantities are added to ghee because here they have written Same Krutehe. The second sloka of Susruta Kalpasthana goes, why I have written this particular sloka because this is bit different from the slokas of Charaka. स मूल पुष्पांग अंकुर वल्कल बीजात क्वाथः शिरीषात् त्रिकटु प्रगाढः स लवणा स लावणः शूद्रयुतो अथ पीतो विशेषतः कीटविष निहन्ति। राइट, सो इट इज मेनली इंडिकेटेड इन कीटविष, राइट, एंड एडमिनिस्टर्ड एज अ क्वाथ, राइट, रूट्स, flowers, leaf buds, bark and seeds of shirisha, trikatu that is sunthi marish pipali, panchalavana and madhu, right? Trikatu praghata, salavanah, shodra. Okay. Therapeutic utility if we see Kita Visha, Sarva Visha, right? As it is Shrestha Vishagda Dravya. And skin manifestation, various skin disorders, or we can say Tvaka Vikaras. Mode of use, internal, like it can be used as a pana, and external as a leper. And if we'll see properties, mainly act because of its prabhava action, right? It is Tridosha Shamaka and Vishagda. If you are new to this channel, please subscribe it, share this video amongst all your batchmates and students. Thank you.